Welcome to the lecture on water erosion. This time we will be discussing what are the factors which affect water erosion. This equation or factors, they have been grouped into one equation, that is universal soil loss equation, USLE. This is known as this one. So factors affecting erosion by water or water erosion is given in the book by Raymond and Brady. Different environmental factors affecting the accelerated erosion have been grouped into universal loss equation USLE as A is equal to RKLSCP. A is equal to RKLSCP. This, what is this USLE or RKSCLP? RKCLP means A stands for soil loss, R stands for rainfall runoff, or as a group climatic erosivity. K stands for soil erodibility. L means slope length. S means slope gradient or steepness. C means cover or management. Cover means cover of the plant or some other kind of cover. And P, erosion control practices. This USLE means a formula for or equation for estimating the loss of soil through soil erosion. It can be two types, RKLSCP for water erosion, or it can be equivalent to F into ICKLU for wind erosion. So both a little bit difference is there because agency is different. Thinking the first one, R factor, climatic factor, rainfall or runoff. The intensity, duration, total amount of rainfall are important. We have been discussing this in the introduction, that the duration, total amount of rainfall, and intensity, the speed. If speed is good, given a sufficient time, and total rainfall is there, this is not would be impractical if you just say कि जी एक ड्रॉप पानी गिर गया या एक 2 मिनट बारिश हुई, 2 मिनट बारिश won't give you anything. So intensity, strength, duration कितना अरसा रहे, and total amount of rainfall कितनी. So maximum total amount of rainfall received in many gentle showers around the year is less damaging than heavy torrential rainfall received in short period of time. Seasonal distribution is also important in controlling erosion. Now let me give you again an example of the convective precipitation, summer precipitation, in which the rainfall comes for a shorter period, but heavy showers there, causing more drastic changes in the form of flood, or in the form of erosion, or in the form of transportation, or in the form of moving, damaging the soil, as compared to slow frontal rainfall which occurs in a winter season. Slow activity is there. So maybe total rainfall is similar, but occurring in a short time, occurring in a long time. So this causes a difference in the erosivity. Heavy monsoon rains cause heavy floods and soil erosion in Pakistan. In 2010, floods
caused huge damages and losses to property, crop, animals, soil, and settlement in Pakistan. Runoff water during winter on frozen soil is less effective. If soil is frozen, especially winter season, then runoff does not cause any damages, is less effective than same extent of runoff in the summer. K. K means erodibility. How soil resists erosion. Soil erodibility is the inherent capability or power of soil to resist erosion. It depends upon physical characteristic, infiltration capability, structural stability. Physical characteristic, whether it is aggregated, is it clay, is it sandy, is it loamy? Infiltration, does it allow water to move inside or it does not allow water to move inside? It is slowly allowed. Structural capability, that whether it has a good structure or it has a poor structure. So this determines the erodibility of the soil. Structural capability, amount of organic matter, soil texture, amount of clay, soil depth, tendency to crust, and presence of impervious layer, they also influence. That is texture, sandy texture, clay texture, loamy texture, hard texture. Amount of clay, if clay is a very tough plastic coherent material particles, it cannot move easily, it cannot move separate. It would not allow water to move inside because of the high percentage of the micropores. So clay soils are tough for infiltration, tough to move away. Soil depth, depth कितनी है? Shallow soils है, depth soil है. Tendency to crusting, कि जी crust formation किसके ऊपर होती है? So that causes affect the infiltration of the water. रेत में पानी जल्दी चला जाता है, आप गिलास पानी डालें एकदम ख़त्म. क्ले में डालें ऊपर खड़ा हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा. So these are the examples. Soil aggregate structure reduces soil erosion. Soil aggregate structure, aggregation of the particles reduces soil erosion. Stable soil aggregate resists soil erosion even in the presence of runoff water. Generally, soil with rapid infiltration rates, higher amount of organic matter, and improved soil structure, they are less erodible than sandy loam, loamy, or loose soil. एरोडेबिलिटी स्केल भी है, ये स्केल 1 से 0 तक है. एरोडेबिलिटी स्केल is measured on K scale varying from 0 to 6. K value is low for all those soil that readily allows infiltration water like sandy soil. एरोडेबिलिटी इंडेक्स 2.2 से लेकर 0.3 तक नॉर्मल है. Soil with a K value higher than 0.3 are easily erodible with high loss of soil. So अब आप देख रहे हैं कि 0.6 जो है 0 से लेके 0.6 तक स्केल है, 0.2 और 0.3 नॉर्मल है, एंड 0.3 से हायर होगी तो एरोडेबल होगा, लॉस होगा. L or S indicates topographic features. L means length of the slope or S steepness of the slope. जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, so with longer length water gains speeds. Steeper, जितना steep होगा it gains speed. Greater the steepness of the slope, greater will be the erosion. Moving runoff water gains speed along the slope. अगर आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, स्लोपी एरिया है, तो आप आस्ता आस्ता तेज होते जाएंगे, कभी कभी गिर भी जाते हैं पहाड़ों में. So this is doubling the flow velocity.
theoretically doubling the flow velocity enables the water. अगर फ्लो वेलोसिटी डबल हो जाए तो क्या होगा कि डबलिंग दी फ्लो वेलोसिटी enables water moves या strengthens water to move 64 times larger particles, allows to carry 32 times more material in a suspension. All these features enhance the overall erosive power by 4 times. So by 4 times it would increase. लेकिन इंडिविजुअली आप देखें कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं, नेचर में डबल हो जाती है, मूवमेंट नीचे आती है तो स्पीड खुद ही तेज़ होती जाती है। तो 64 टाइम्स लार्जर पार्टिकल्स अलाउ होंगे, ज़्यादा होंगे, और 32 टाइम्स मोर मटेरियल वुड बी moved in a suspension form. Altogether, the overall net answer would be that 4 times greater erosion would occur. Length of the slope. Length of the slope is very important. This is more common in the hilly area, slopy area, where water moves with a gushing rushing situations as compared to the plains. Greater the length or extension of the inclined area, greater would be the concentration and velocity of the moving water, thus increasing the erosive power of the water. Let me give you a common man example. हमारे इलाकों में नहरें हैं, आप देखें नहर एक कुछ ख़ास डिस्टेंस के बाद, मील के बाद, आधे मील के बाद आप देखें कि वो उसको कट कर देते हैं और डिप्रेशन क्रिएट करके थोड़ा सा कम कर देते हैं नीचे, एक ही स्लोप पे नहीं रखते। वो जो उसकी लेंथ ऑफ स्लोप है, वो लेंथ ऑफ स्लोप को जगह जगह से कम कर देते हैं, काटते हैं। क्यों? अगर ये लेंथ ऑफ स्लोप एक शुरू से चले, स्टार्ट से, तो आखिर पे ये ऐसी होगी कि जी कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। सो हम वाटर इरोजन कम करने के लिए, वाटर मूव कम करने के लिए स्लोप की लेंथ को कम करते हैं। स्टीपनेस ऑफ स्लोप, इट इज़ ऑब्वियस दैट स्टीपर द स्लोप एंड ग्रेटर द लेंथ ऑफ द फील्ड, दोनों मिला के greater would be the amount of soil erosion due to increased velocity of the water. Consolidation of small fields into larger ones often increases eroding power due to increased velocity of water. अगर आपका खेत बड़ा है तो आप छोटे छोटों को मिला के एक ही खेत बना रहे हैं, एक ही स्लोप बना रहे हैं, तो दिस इंक्रीजेज वेलोसिटी। इस चीज़ को कम करने के लिए ये नहरें हैं या इस तरह हैं या स्टेप्स कहीं आप देखिए बने होते हैं, तो पानी कम करने के लिए बने होते हैं। दिस इज मैकेनिकल इन्फ्लुएंस टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। सी वेजिटेशन कवर, ज़ाहिर है कि जहाँ भी वेजिटेशन होगा, घास में पानी बड़ा स्लो मूव करता है, फॉरेस्ट में पानी बड़ा स्लो मूव करता है, क्योंकि ऊपर से अगर रेन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, दोनों हालतों में वेजिटेशन कवर रिड्यूसेस मूवमेंट ऑफ वाटर, रिड्यूसेस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। Cover management practices, crop cover effect, soil erosion. A 30% cover effectively reduces soil erosion. Minimum 30%. 100% है तो खास फायदा नहीं होगा, उतना ही काम करेगा जितना 30% है। So 30% cover effectively reduces plant cover. चाहे वो कवर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ रेनफॉल कैसी है, एरिया कैसे है। इफ़ इट इज़ अ फॉरेस्ट, इफ इट इज़ अ ग्रासलैंड, तो आप देखें कि व्हेनेवर ग्रासलैंड में से पानी पास हो रहा होता है तो पानी के बाद आप देखें ग्रासेस के ऊपर मिट्टी जमा होती है, रिटेंशन होती है, हेजेस में रिटेंशन होती है, ट्रीज़ में पानी की स्पीड वेलोसिटी कम होती है, बारिश की कम हो जाती है। प्लांट्स एंड रेजिड्यू कवर प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम rain beating effect or splashing effect. It checks the movement of the surface runoff that promotes infiltration. ये प्लांट कवर जो है मूवमेंट ऑफ वाटर या रन ऑफ वाटर या सरफेस वाटर की मूवमेंट को कम करता है। इट प्रोवाइड्स मोर टाइम द वाटर टू एंटर इनटू द सॉइल।
Forests and grasslands provide better protection to soil against water erosion. Suitable crop rotation also reduces soil erosion. Bare soil is susceptible to erosion. The C value of such soil may be 1. C value of is low, 0.10, for soil covered with dense forest or large amount of crop residue or in grassland situation. Vegetation reduces erosion by intercepting rain, providing organic matter, reducing velocity of runoff water, improving physical properties of the soil. Combination of vegetation cover and arid residue effectively reduces erosion. P. P means soil erosion practices. Whatever we do to reduce the soil erosion. Management land directly or indirectly, like contouring, means breaking the length, strip cropping, tillage cropping practices, and other supporting measures can reduce soil erosion by water element दोनों के लिए है. An integrated approach is better than the single. Without any support practices, P value is 1. That means that high erosion would be there. Adverse effect of soil erosion क्या हो सकते हैं water की? Soil erosion removes topsoil, reduces crop and seedling emergence, reduces seed bank, growth, yield, nutrients, applied fertilizer, organic matter, or seeds are lost. Soil quality and productivity is adversely affected by negatively influencing the structure, stability, texture, water holding capacity, physical, chemical, or biological feature of the eroded land. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर लैंड यूज अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी. हम हमारे इलाके में या हम जो भी ज़मीन मिलती है चाहते हैं जी कि बस इसमें गंदम जौ ज्वार कल्टीवेट करें इर्रिस्पेक्टिव कि वो इस काबिल है कि नहीं है. Generally, land with 2 to 5% slope can be cultivated. A slope जिसका 5% तक slope हो उसको हम cultivate कर सकते हैं. Steep slope should not be cultivated because they are easily erodable by water, easily erodable by air, easily erodable by gravity. Marginal lands with gully and steeper slopes are suitable for range plants and trees only. अब ये proper land use ये है कि आप उसमें crops do not cultivate crops, cultivates fodder crops, rangeland plants, trees को cultivates करें, shrubs को करें, those plants which you can use for other purposes. Steep slope land under cultivation can be converted to permanent pastures. इनको आप चरागाह बनाएं, pastures बनाएं ताकि इसमें गाय भैंसे या बर्ड्स या एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स ग्रेज हो सकें. Provide them cover, not cover of cultivated plants. Woodland areas with poor soil and steep slope can be left in their natural state. अगर वो woodland है, soil is poor, water is not available, then you leave them as such at the mercy of the nature, so that natural state and managed profitably as a forest or rangeland. उसको आप बतौर फॉरेस्ट या रेंजलैंड के, रेंजलैंड हम उसको कहते हैं उस ज़मीन को, उस एरिया को जो किसी वजह से कल्टीवेट नहीं हो सकती, आइदर लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ गुड लैंड, और कोई ऐसी वजह कि जो वो स्लोप के कल्टीवेट नहीं कर सकते, उसको हम रेंजलैंड कहते हैं. रिटेंशन ऑफ रेन वाटर, दिस इज़ अनदर वे कि आप रेन वाटर को रिटेन करें. रेन वाटर शुड बी रिटेन टू रिड्यूस रन ऑफ, प्रमोट इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल. ये आप जो चोलिस्तान में, थल में, थर में, देखान में, इन इलाकों में देखें, डेजर्ट एरिया है, बारिश होती है, पानी इज़ नॉट देयर,
बट वो उसको रिटेन करते हैं, डैम्स बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं, ताकि वो पानी उसमें रहे जानवरों के लिए और उनके पीने के लिए। सरप्लस वाटर कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली बाय कीपिंग द सॉइल कवर्ड विद क्रॉप्स प्लांट्स, कीपिंग द फील्ड लूज टू अलाउ मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन। सरप्लस वाटर को आप स्टोर करें, जैसे कि अभी मैंने कहा कि बलूचिस्तान में टोबा कहते हैं। टोबा मीन्स वो रेन वाटर को जमा करते हैं और जब तक वो ड्राई नहीं होता उसको यूज़ करते हैं अपने लिए भी और एनिमल्स के लिए और वाइल्ड एनिमल्स के लिए। डी खान में भी इसी तरह है, डी खान में भी इसी तरह है। थल थल डेजर्ट यजमान जहाँ आप जाएं यू कैन सी दिस थिंग। इनको आप स्टोर करें। मिनिमाइजिंग रन ऑफ वाटर, रन ऑफ वाटर को मिनिमाइज करें, डिक्रीज करें, इसके आगे बन डालें, पौधे खड़े करें, पौधों की दीवार खड़े करें ताकि रन ऑफ वाटर कम हो जाए। स्टोरिंग सरप्लस वाटर, अब इसके दो मकसद हैं। सरप्लस वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डैम्स और सूटेबल रिजर्वायर्स। स्मॉल डैम्स, नॉट डैम्स लाइक तुरबेला मंगला, स्मॉल डैम्स आप बनाएं, पानी को वहाँ खड़ा करें, उसको टाइम प्रोवाइड करें। ये इन्फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा और ग्राउंड रिचार्ज में भी हेल्प करेगा। This would cause infiltration of the water. Water, instead of moving out swiftly, would stay there, infiltrate, enter into the soil. Infiltration हम कहते हैं the entry of the water into the soil. और ground recharge भी करेगा. When it infiltrates, it would try to move to the ground जो underground table है, permanent water table वहाँ तक पहुँचे. वहाँ से you can use it. The stored water can be used for other purposes. मेंटेन फर्टिलिटी, अगर आप फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं किसी भी सॉइल की, चाहे वो डेजर्ट सॉइल है, ड्राई सॉइल है, तो उस पर गुड पौधे, क्रॉप्स, वेजिटेशन या रेंज प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आपको बन सकता है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ नॉन एरेबल लैंड्स, एक और तरीका ये है जी कि आप नॉन एरेबल वो इलाका, वो एरिया जो कि अफेक्टेड है लेकिन कल्टीवेशन के काबिल नहीं है फॉर एग्रीकल्चर का, उसका और कोई इफ़ेक्टिव यूज़ करें। और वो इफ़ेक्टिव यूज़ होगा उसकी टोपोग्राफी पे, डिग्री ऑफ एरोजन पे, डिग्री ऑफ नॉन कल्टीवेशन पे, और इसको आप एज ए पेस्चर, एज ए फॉरेस्ट, एज ए रेंज, चरागाह के तौर पे, शिकारगाह के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।